हेलो मैम। हाय, कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया मैम। वेलकम बैक टू सनी एयरपोर्ट। थैंक यू सो बताओ मच। जी, कैसा कलर करना है? जैसा आप सजेस्ट करोगे, मैं यहाँ आके सोच के नहीं आती। इट्स ऑल योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस, व्हाटएवर यू लाइक। थोड़ा ऐश में रखना है। ठीक है, हाँ जा सकते हैं। पहले वाला कलर कैसा रहा था आपका? बहुत अच्छा, काफी बढ़िया? टाइम। इनफैक्ट येलो ऑरेंज नहीं हुआ, हल्का सा टेंच, बट देन नहीं हुआ। प्लस पॉइंट है, बाल लॉन्ग हो चुके हैं। हाँ काफी काफी। चलो ठीक है। ठीक है, सो थोड़ा बाल्याज में करें। ठीक है। बाल्याज में ही। हाँ और done। थोड़ा सा ऐशी टोन में चलते हैं, क्योंकि Done। आपको मुझे पता है ऐशी पसंद है। हाँ, ब्राउन लगे करूंगा तो आपको लगे। मजा नहीं आएगा। लगे। ऐश टोन में चलते हैं। बट है। इस बार प्लस पॉइंट ये है कि आपने काफी टाइम वेट कर लिया। हाँ, I नहीं तो know, 3 I महीने में know। ट्रांसफॉर्मेशन करनी आपका पड़ती है। अपॉइंटमेंट भी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर श्योर, या डन। एक्साइटेड? या वेरी वेरी मच। चलो जी बॉस।
आपको। सो फाइनली मैम, Finally, I know. After so कैसा many लग रहा है hours. कलर? Very beautiful, very different. I just love it. बहुत सुंदर. चारों टाइम के बाद आई थिंक फिफ्थ टाइम में और अच्छा हुआ है. एवरी टाइम बेटर होता है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत एवरी हेयर कलर में चेंजेस दिखते हैं। एवरी टाइम. यस, इट्स लुकिंग वेरी नाइस. दोबारा नहीं नहीं नहीं, चलने दो। बट ये टास्क बहुत मुश्किल होता है कि एवरी 6 मंथ में 3 मंथ में दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन। आई नो आई ऑलवेज गेट डैमेज्ड हेयर. नहीं नहीं, बाल अच्छे हैं बिल्कुल, आप केयर कर लेते हो, आपको संभालना आता है, इसलिए आप एश टोन संभाल लेते हो बार बार। आई नो, बट थैंक यू सो मच. आई थिंक आपके चीज़ों की वजह से ही होता है, अदरवाइज मैं तो नहीं कर पाती हूँ. बहुत सुंदर कलर लग रहा है इस बार. थैंक यू सो मच। सो अगर एश टोन आपने नेक्स्ट टाइम करवाना भी है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि 8 मंथ 1 ईयर गैप होना चाहिए, I ताकि will आप come अच्छे after 6 months as usual. Yeah. I will come after से, 6 मुझे months. पता है। तो आप मैनेज करो. Right. Thank you. It's looking very nice. ठीक है बॉस, Thank you. Thank you so much. वेलकम। Thank you.